Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. So in today's video, we are going to learn about humanistic and existential counseling. So let's start with humanistic therapy or humanistic counseling. We will study from different materials so that we can understand all aspects of humanistic and existential counseling. Let's start with humanistic therapy, which is also known as humanism. So it is form of talk therapy that focuses on a person's individual nature rather than assuming that groups of people with similar characteristics have the same concerns. तो ह्यूमनिज्म इज बेसिकली एक फॉर्म होती है टॉक थेरेपी की जो कि फोकस करती है इंसान के इंडिविजुअल नेचर पे। और जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट होते हैं दे एम टू कंसीडर द होल पर्सन। वो एक इंसान को कंप्लीट मानते हैं। उनका मतलब जो मेन जो मेन व्यू है, जो मेन फोकस है थ्योरी का, वो ये है कि एक इंडिविजुअल खुद में कंप्लीट होता है। तो दे कंसीडर द होल पर्सन, स्पेशली उनके पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स एंड उनका पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ना ही सिर्फ उनके प्रोफेशनल व्यू पॉइंट से बट क्लाइंट के पर्सनल सेंस ऑफ देयर बिहेवियर के व्यू पॉइंट से भी। तो जो एम्फेसिस होता है सेशंस में वो इंसान की पॉजिटिव ट्रेट्स और बिहेवियर्स पे होता है एंड डेवलपमेंट पे होता है, उनकी एबिलिटी पे टू यूज देयर इंस्टिंक्ट्स टू फाइंड विजडम, ग्रोथ, हीलिंग एंड फुलफिलमेंट। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के कुछ टाइप्स होते हैं। अ, जैसे कि एक हो गया क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी, जो कि मेन है, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसको हम पर्सन सेंट्रिक थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यूज करता है, इंडिविजुअल एक्ट करता है एज एन इक्वल पार्टनर, और जो थेरेपिस्ट होता है वो एम्पैथी प्रोवाइड करता है और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करता है। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होती है दैट वी विल रीड इन डिटेल, मतलब पूरा क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी कौन से टाइप्स होते हैं, लेट्स सी दैट। लोगो थेरेपी में क्या होता है, ये जो थेरेपी होती है ये फोकस करती है किस चीज पे, हेल्पिंग पीपल फाइंड वीज टू एंड्योर लाइफ डिफिकल्टीज एंड फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। ठीक है, तो मेन इसका जो पॉइंट है वो है फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। It proposes that finding meaning in life can help improve mental well-being and relieve symptoms of conditions including depression, grief, and trauma. Then there is this narrative therapy, which helps people identify their values and skills by focusing on their personal stories and experiences. इससे क्या होता है, इसका गोल बेसिकली होता है कि लोगों को ये दिखाना कि उनकी दे आर नॉट देयर प्रॉब्लम्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम, they are separate from their problems. Then solution focused therapy में क्या होता है, जिसको हम brief therapy भी बोलते हैं। They basically look at what the individual wants to achieve rather than historical problems. Basically questions, therapist questions पूछता है client से, जिससे कि client अपनी strengths uncover कर पाए। सोल्यूशन फोकस थेरेपी स्पेशली उन प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल होता है जो कि हमें लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स वगैरह अचीव करना है, उन चीजों के लिए होता है। देन व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड इन ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। So humanistic therapists use a number of techniques that are designed to support people as they work towards change. पहला है congruence। तो ये जो टेक्निक है, इट इज असेंशियल टू ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एंड इट इन्वॉल्व्स कि जो थेरेपिस्ट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए एज दे इंटरैक्ट विद द इंडिविजुअल हु इज इन थेरेपी। कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ह्यूमनिज्म में, विच वी विल रीड इन डिटेल दूसरे पार्ट में। सो फर्स्ट अभी हम ये वाला कवर कर रहे हैं, तो लेट्स सी दिस वन ओनली। देन एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट नॉट ओनली अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज फीलिंग एंड सेइंग बट आल्सो कम्युनिकेट दैट अंडरस्टैंडिंग टू द क्लाइंट। तो इंडिविजुअल को हर्ड फील होना चाहिए, सीन फील होना चाहिए, अंडर फील होना चाहिए। देन देयर इज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग,
इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को एक्टिवली लिसन करना होता है एंड समराइज करना होता है क्लाइंट ने जो कहा वो अपने खुद के वर्ड्स में। इस स्ट्रैटेजी से हम रीइंफोर्स कर सकते हैं कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, जिससे कि क्लाइंट खुद रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्या बोला एंड अपनी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह समझ पाए, अपनी थिंकिंग समझ पाए। एंड द लास्ट वन इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब होता है कि थेरेपिस्ट जो है वो इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करे किसी भी जजमेंट के बिना। ये बेसिकली केयरिंग एटीट्यूड शो करता है, जिससे सेल्फ ग्रोथ में हेल्प मिलती है, पर्सनल ग्रोथ में हेल्प मिलती है और सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प मिलती है। तो मेन चार चीजें, सॉरी हाँ, चार चीजें हैं जो हमें याद रखनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स, क्योंकि ऐसे कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स नहीं है इसमें। कुछ these are like techniques. It is basically like कि थेरेपिस्ट को क्या करना चाहिए या फिर थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है कॉन्ग्रुएंस, दूसरा है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर। इवन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग इज क्लियर एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चार चीजें हैं। When talking about goals of humanistic therapy, तो जो गोल होता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का वो ये होता है कि क्लाइंट को हेल्प करना, डेवलप करने में एक स्ट्रॉन्गर, टू डेवलप अ स्ट्रॉन्गर एज वेल एज एक्सेस एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स टू हेल्प गेन अ सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ। बेसिकली वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको लाइफ का मीनिंग समझाना, कैसे उनकी फीलिंग्स ही उनको पहले अंडरस्टैंड करवाना और उसके थ्रू कि उनका लाइफ, वो लाइफ से क्या चाहते हैं वो चीजें समझाना। तो बेसिकली ये हेल्प करता है क्लाइंट को रीच करने में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। So whenever we talk about humanism, self-actualization is very much important to remember. तो जो लेवल होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, उसको अचीव किया जा सकता है जब और सारी मेंटल और बेसिक नीड्स एसेंशियली फुलफिल हो चुकी हो, और जो एक्चुअलाइजेशन हो पर्सन का वो फाइनली तभी फुलफिल हो सकता है जब बेसिक नीड्स पूरी है, मेंटल और फिजिकल। ये जो थेरेपी होती है ये इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ पर फोकस करती है और नॉन जजमेंटल काउंसलिंग सेशंस ऑफर करती है। नाउ व्हाट आर द पोटेंशियल लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। तो कुछ पीपल में स्ट्रगल टू अडेप्ट टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि ये इस वे में होगी। तो विच इज लाइक अ ड्रॉबैक। तो इट लैक्स स्ट्रक्चर विच इज लाइक फर्स्ट ड्रॉबैक। और द clients with higher level of stress or anxiety may benefit from working with therapists who offer more direction। ठीक है, तो मतलब बेसिकली लैक ऑफ स्ट्रक्चर है तो डायरेक्शन उतना प्रोवाइड नहीं करता जितना दूसरी थेरेपीज प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ क्लाइंट के लिए ये उतना यूजफुल नहीं हो सकता। और सिमिलरली क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट डायग्नोसिस पे उतना फोकस नहीं करते, तो जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह के सिम्टम्स होते हैं उनको इस अप्रोच से उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। इफ अ प्रोफेशनल बिकम्स कन्विंस्ड कि क्लाइंट आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के साथ, उनको इंडिविजुअल को रिकमेंड कर देना चाहिए, उनको रेफर कर देना चाहिए जो कि डिफरेंट एक्सपर्टीज, किसी ऐसे थेरेपिस्ट को जो कि दूसरे एरिया में एक्सपर्ट हो। Now, same cheese we will study like humanistic therapy only, humanistic counseling only, but from other material. So let's study person-centered therapy in detail. So it was developed by Carl Rogers in 40s, 1940s. Okay. तो इसका short form हम PCT use करेंगे, person-centered therapy. Where this therapy is categorized as an affective approach, a group of approaches which have a subjective view of human nature and rely on the human ability, self-awareness as fuel to personal growth. Person-centered therapy uses a phenomenological approach, which means it focuses on the experiences of the person and how does the person experience herself and the world around. This direct personal experience or organismic experiences related to one's self are crucial for one's learning, enhancement, and self.
ठीक है, तो बेसिकली ये जो पीसीटी होता है ये रिलाई करता है हमारी जो एबिलिटी होती है ह्यूमंस की ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो उनका मानना ये है, कार्ल रॉजर्स का या फिर पीसीटी थेरेपी का, ये मतलब कि इस व्यू पे वो काम करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो पर्सनल ग्रोथ में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। तो मूविंग ऑन, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। तो पीसीटी का जो फंडामेंटल बिलीफ है वो ये है कि हर एक ह्यूमन रैशनल होता है और वर्दी होता है। उनको पता होता है इनहेरेंटली कि उनके लिए बेस्ट क्या है। और कार्ल रॉजर्स बेसिकली ये बिलीव करते थे कि जो लोग होते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं वो अंदर से अच्छे ही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड मूविंग होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। PCT also believes that people try to work towards becoming the best version of themselves. And the need for individuals to actualize is considered the fundamental human right. तो इसमें fundamental human right क्या है? The need to actualize. Roger also believed that each individual not only had the potential to actualize but also had an inner voice that guided them towards what was right or best for them, what he called an individual's organismic valuing process. Okay, so if you can remember this term, please do. सो बेसिकली ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंट्यूशन होता है बेसिकली कि हमारे लिए क्या सही है गलत, उसको कार्ल रॉजर्स ने क्या नाम दिया था? ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली की होता है, की ड्राइविंग फोर्स होता है किसी के एग्जिस्टेंस का, और इन्फ्लुएंस करता है एक्शंस को और बिहेवियर्स को ह्यूमन बींग्स के। मेन फोकस सेल्फ पे होता है और लाइफ का क्या मीनिंग है, पर्पस है, ये फाइंड आउट करने में होता है। रॉजर की थ्योरी को हम सेल्फ थ्योरी भी बोलते हैं। एक इंडिविजुअल कैसे खुद को परसीव करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे परसीव करता है, और रिएक्ट और उनका रियलिटी का क्या इंटरप्रिटेशन हो है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर इनकॉन्ग्रुएंस होता है परसीव्ड रियलिटी में और एक्चुअल रियलिटी में, तो इंडिविजुअल की लाइफ में माल एडजस्टमेंट हो सकता है। ये जो लाइन है, इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्ग्रुएंस, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर अभी समझ नहीं आया तो डोंट वरी, आगे ये हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कॉज क्या है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का? पीसीटी के अकॉर्डिंग जो कॉज होता है डिस्ट्रेस का इंडिविजुअल्स में, वो ये होता है कि देयर इज सेपरेशन, देयर इज डिफरेंस उनके रियल एक्सपीरियंसेस में। मतलब बेसिकली वो एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, उनको एक्चुअल में क्या फील हो रहा है, और उनके सेल्फ कंसेप्ट में कि वो क्या सोचते हैं कि वो कर सकते हैं और वो क्या बनना चाहते हैं। जब उन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है तब डिस्ट्रेस इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो सोसाइटी और जो जो भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन चीजों से हमारा सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। और इसलिए गैप होता है रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में। रियल सेल्फ इज मोर लाइक कि हम जो अभी हैं एक्चुअल में, और आइडियल सेल्फ इज जो हम बनना चाहते हैं। तो सपोज यू, एक एग्जांपल यहाँ पे ये लिया गया है कि हमने कोई, सपोज यू ज्वाइन सम पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग, बट लेकिन तुम उतने क्विकली समझ नहीं पा रहे जितना दूसरे लोग कर ले रहे हैं। और किसी एक सेशन में यू हर्ड कि तुम्हारा जो ट्रेनर है वो तुम्हें बोल रहा है कि ओ नो, ये जो स्टूडेंट है इसको तो समझ ही नहीं आ रहा। इस टाइम मेरी ट्रेनिंग में मैं तो हवा में 60 सेकेंड्स तक रुक सकता था। तो फिर ये सुनने के बाद यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, और यू विल मेक अ पर्सनल गोल फॉर योर सेल्फ कि यू विल ट्राई टू स्टे इन द एयर फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। बट अगर ये अचीव नहीं हुआ ये पर्सनल गोल, यू विल फील बैड अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे बेसिकली ये हुआ कि सोसाइटी ने कुछ कंडीशंस पुट की कि इस टाइम तक तो लोगों को 60 सेकेंड्स तक रह लेना चाहिए हवा में, और ये तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से यू फोर्स्ड योर सेल्फ कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये गोल अचीव नहीं होगा, तब तक यू आर नॉट वर्दी। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर वेयर यू आर इन योर जर्नी,
You forced yourself to accomplish a goal based on societal expectation. तो जितना ज्यादा ये गैप होता है कि सोसाइटी आपसे क्या चाहती है और आप एक्चुअली में कहाँ पे हो, जितना ज्यादा ये इंक्रीज होता है उतनी ज्यादा और जितना ज्यादा हमारे एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एक इंसान के कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन एक्सपीरियंस करने के. सो हियर वी कैन सी ये सेल्फ कंसेप्ट है, ये यहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस है. ठीक है. और ये जो बिग गैप है दोनों में, जो बिग गैप है, that is incongruence. That is basically incongruence. तो incongruence क्या होता है? incongruence एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे बहुत ही कम ओवरलैप होता है रियल एक्सपीरियंसेस में कि वो एक्चुअली क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, और उनके सेल्फ कंसेप्ट में कि वो क्या अ, मतलब सेल्फ कंसेप्ट बेसिकली कि उनको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, या उनको क्या फील होना चाहिए. तो जब एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में होता है तो उसको कुछ चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है बचपन से कि उसको ऐसे करना चाहिए, इतना करना चाहिए, तो एक कॉन्शियस लर्न सेल्फ बन जाती है खुद के बारे में बेस्ड ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. और जब ऐसा पर्सन सक्सीड करने का ट्राई करता है तो ये चीजें उन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने बोला था कि मैं डॉक्टर बनूं जब मैं बड़ी हूँ, और मेरा सेल्फ कंसेप्ट भी बोलता है कि मुझे बायोलॉजी पसंद है तो अब मैं मेडिकल एग्जाम दूंगी और मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगी. तो ये जो इंसान है ये अपना पर्स ये जो गोल है ये खुद का पर्सनल ग्रोथ, मतलब दिस पर्सन एक वो ऐसा गोल अचीव करने का ट्राई कर रहा है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में. बट एक्चुअली में वो खुद का गोल नहीं है उसका. वो सोसाइटी ने जो फोर्स किया उस पे वो गोल है. तो इसको हम सोसाइटी बेस्ड एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं. क्या होगा अगर वो इंसान मेडिकल एंट्रेंस ना निकाल पाए तो ये होगा कि सोसाइटी ने कंडीशंस क्रिएट कर दी थी वर्थ की कि जब अगर तुम डॉक्टर हो तभी तुम्हारी वैल्यू होगी. तो इंडिविजुअल खुद को ऐसे ट्रीट करने लगेगा, खुद के लिए ऐसी कंडीशन सेट कर देगा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है. और इसको हम बेसिकली कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोलते हैं कि मतलब कंडीशन है कि तभी इज्जत मिलेगी, तभी तुम्हारा वर्थ होगा जब तुम ये कुछ कर पाओगे जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट करती है. तो जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है खुद के एक्सपीरियंस में और खुद के सेल्फ कंसेप्ट में, तो वो इंसान इनकॉन्ग्रुएंस एक्सपीरियंस करता है. मतलब खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद के गोल्स एक्चुअल में बहुत अलग है, और खुद का जो सेल्फ कंसेप्ट है कि सोसाइटी क्या चाहती है उसमें बहुत डिफरेंस है. तो बहुत इनको उस स्टेट को हम इनकॉन्ग्रुएंस बोलेंगे. और जब इस पर्सन को जो कि इनकॉन्ग्रुएंस एक्सपीरियंस कर रहा है उसको अगर एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में पुट कर दिया जाए जहाँ पे जो गैप है रियल और सेल्फ कॉन्सेप्ट में वो बहुत ही एविडेंट है, तो जो इंसान है उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, वो डिफेंसिव बन जाएगा. और ये जो डिफेंसेस हैं, अगर ये एंजाइटी को नहीं कोप कर पाए एंजाइटी से, तो जो इनकॉन्ग्रुएंस है वो इंक्रीज होता रहेगा और इवेंचुअली एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा इंसान का. लाइक सपोज यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉक्टर वाला. तो जो इंसान है उसने कोचिंग ज्वाइन की, और कोचिंग ज्वाइन करके अपनी रियलिटी पता चली कि रियलिटी में आई मीन इट्स अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो रियलिटी में अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इम्प्रूव करने की. एंड इवन आफ्टर 6 मंथ द पर्सन रियलाइजेस कि उतना आईक्यू नहीं है या फिर उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है. तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे ब्रेक डाउन हो सकता है उस इंसान का अगर प्रॉपर डिफेंसेस यूज नहीं किए गए. क्योंकि सोसाइटी डॉक्टर बनाना चाहती है, नाउ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, या फिर यू जस्ट फील लाइक चेंजिंग द फील्ड. तो फिर उस टाइम पे बहुत ब्रेक डाउन हो सकता है इंसान का.
Then moving on, now if there is a small gap, then there is congruence. That being said, one must have a motivation to do better and be a better version of themselves. इसका मतलब ये है कि गैप तो हमेशा रहेगा. We always want to be a better version of ourselves. तो गैप तो हमेशा रहेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं और हम क्या है. पर अगर ये जो गैप है ये कम है और जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी रियलिस्टिक है, खुद की कैपेबिलिटीज पे बेस्ड है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है, तो तब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं होगा. इट वुड बी मोर लाइक अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर यू दैट यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. तो जो मेन एम होता है या गोल होता है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का, उसका फोकस होता है डेवलपमेंट और एक्चुअलाइजेशन में पर्सन के. इसको फॉलोइंग आर द वेरियस गोल्स ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी. पहला क्या है? इंक्रीज द पर्सन ओपननेस टू एक्सपीरियंस. तो पीसीटी जो है वो एनकरेज करती है क्लाइंट्स को कि वो अपने सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करें. थेराप्यूटिक गोल होता है कि क्लाइंट को एक स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकती है, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, इमोशंस, सब चीजें एक्सप्लोर कर सकती है और खुद को बेटर समझ सकती है. देन डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है तो आई डोंट थिंक इसको मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है. तो जो पहला गोल है पीसीपी का वो यही है कि इनकॉन्ग्रुएंस का लेवल डिक्रीज कर सके. क्लाइंट्स जो कि जिनको की ज्यादा एंजाइटी हो रही होती है या जो ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो थेरेपी लेते हैं. तो क्लाइंट को हेल्प किया जाता है अपने गैप दिखाने में कि वो क्या है और आइडियल सेल्फ क्या है उनकी. और उनको कंडीशन पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, उनको बताया जाता है दैट दे आर करेंटली गिविंग देयर ओन सेल्फ कंडीशन पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, जिससे कि ये गैप डिक्रीज हो पाए. बिकॉज यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करता है, तो उससे हेल्प मिलती है क्लाइंट को. देन गेटिंग इन टच विद वंस और ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस. तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था. तो इट इज बेसिकली innate tendency to know what is best for you, and what knowing what to change in order to have a more fulfilling life. Furthermore, he believes that once one can get in touch with this innate feeling, they will constantly have an internal voice that motivates them to move towards a more fulfilling life. तो यही एक और गोल होता है पीसीटी का. देन स्ट्राइविंग फॉर एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज व्हेन अ पर्सन completely realizes her potential and develops to the full of her abilities. ये एक स्टेज हो रही है जहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन करता है जितना ज्यादा लाइक जितनी भी जो भी उसकी बेस्ट सेल्फ है बेसिकली उस पे वो एक्ट कर रहा है. तो पीसीटी का गोल होता है कि एक्चुअलाइजेशन तक एक इंसान को लेके जाना. एंड लास्ट गोल इज डेवलपिंग एज अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन. और फाइनली पीसीटी एम करता है कि क्लाइंट एक फेज रीच करे जहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है, हाई ऑर्गेनिज्मिक वैल्यू है, और एक्चुअलाइजेशन के लिए यू आर स्टिल एमिंग, and through all this are capable of experiencing completeness and joy. Now moving on to the role of the counselor in humanism or humanistic therapy. तो यहाँ पे काउंसलर का एक्चुअली कोई रोल नहीं होता है. इसलिए ये एक रीजन है इसको हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं. काउंसलर का फंक्शन इस थेरेपी में लर्न नहीं होता है, मतलब कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पहले से प्रोवाइडेड नहीं होता है कि ये करना है. बट इट इज मोर लाइक कि एक्सपीरियंस करता है थेरेपिस्ट खुद. वो थेरेपिस्ट ट्राई टू बी एन एम्पैथेटिक लिसनर जिसको क्लाइंट के एबिलिटी में बिलीफ है. It is the beliefs and attitudes that the counselor has that shape his role as a therapist and not a set of learned techniques. बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट गाइडेंस सीख करता है और पीसीटी काउंसलर खुद को कोई एक्सपर्ट नहीं समझता है. इट्स नॉट लाइक कि सीबीटी चल रहा है इधर, सॉरी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें बेसिकली काफी स्ट्रक्चर होता है. थेरेपिस्ट क्लाइंट को होमवर्क वगैरह देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है.
काउंसलर का रोल यहाँ पे बेसिकली बहुत लाइक कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. इट्स मोर लाइक एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. तो जो काउंसलर होता है वो शो करता है केयर, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस क्लाइंट के टूवर्ड्स. एंड काउंसलर को बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक रहना पड़ता है. तो बेसिकली वो यहाँ पे थेरेपिस्ट का जो एम होता है वो फैसिलिटेट करना होता है, ना कि डायरेक्ट करना. पीसीटी इज ऑल्सो ओपन टू क्लाइंट्स एक्सप्लोरेशंस. और जो क्लाइंट है वो अपना जो फोकस है थेरेपी का वो प्राइमरी कंसर्न से दूसरे एरिया से भी शिफ्ट कर सकता है, जो कि पास्ट में उसने नहीं किया था. तो काउंसलर को ऐसी स्पेस क्रिएट करनी होती है जहाँ पे क्लाइंट कैन फील फ्री टू एक्सप्लोर एनी एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर लाइफ. और बेसिकली जो पीसीटी थेरेपिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो क्लाइंट है वो एक्सपर्ट है खुद की लाइफ का. और क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस होता है थेरेपी में, तो पीसीटी में जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस होता है और जो काउंसलर का एटीट्यूड होता है वो डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ थेराप्यूटिक चेंज एंड सक्सेस ऑफ थेरेपी. जो थेरेपिस्ट है वो प्रोवाइड करता है एक सुटेबल एनवायरनमेंट, और ये होप किया जाता है कि जो क्लाइंट है वो सेफ फील करेगा, रिस्पेक्टेड फील करेगा और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस बिगिन करेगा. तो जो client है would begin looking at all aspects of their life and the full range of their experiences. As time progresses and the relationship between the counselor and client is strengthened, the client experiences increasing freedom to expand the areas of exploration. और इसमें थोड़ा बहुत सेल्फ डिस्क्लोजर भी करना होता है थेरेपिस्ट को, जिससे कि जो क्लाइंट है वो भी अपने इमोशंस और थॉट्स शेयर करने लगे, जो कि आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर आइडियल सेल्फ, जैसे कि गिल्ट, शेम, jealousy. Clients now come to accept and appreciate themselves in the course of therapy. The goal of therapy is to help clients reach a point where they can deal with conflicts, to come to grips with problems, and overbalance the regressive and self-destructive forces. Now, what techniques or strategies are used? So PCT solely relies upon counselor-client relationship, but Roger gave six conditions जो कि met होनी चाहिए for therapeutic intervention to work. And he called these six the necessary and sufficient conditions for the success of therapy. Uh, इसमें से तीन रिक्वायरमेंट थेरेपिस्ट की साइड से होती हैं. पहला है थेरेपिस्ट का कॉन्ग्रुएंस और जेन्युइननेस. ये बेसिकली रिक्वायर करता है कि थेरेपिस्ट ऑनेस्ट और जेन्युइन रहे क्लाइंट के साथ. इसका मतलब है कि रियल सेल्फ शो करे थेरेपिस्ट अपनी सेशन के टाइम पे. काउंसलर की जेन्युइननेस या ऑथेंटिसिटी हेल्प करता है क्लाइंट को अपनी खुद की प्रॉब्लम शेयर करने में. It must also be noted that therapists are also on their journey towards actualization and reducing the incongruence between their own self and ideal self. So the aim to be as genuine as possible and constantly aim to be more genuine with the client. Then unconditional positive regard, basically client को accept करना for who they are, and जो भी उनके experiences हैं उसको non judgmental होके सुनना और क्लाइंट को जज ना करना. इसका मतलब ये नहीं है कि जो थेरेपिस्ट है वो हर चीज अप्रूव करता है जो कि क्लाइंट ने की है. Nonetheless, the counselor accepts that this is how it is in this present moment. तो आगे कैसे चेंज होगा वो सब देखा जाएगा, बट ये हो चुका है. एंड विदाउट एनी नॉन जजमेंटल, सॉरी, विदाउट एनी जजमेंटल thinking, therapists should be like genuine and authentic with the client and show that they actually accept for who they are. And third one is empathetic understanding. So this is experiencing the client's feelings as if they were of your own, but losing the as if quality. A PCT counselor must strive to see a client's feeling from the client's perspective, but not get carried away with those feelings. और तीन जो कंडीशंस है वो क्लाइंट पे डिपेंड करती हैं ज्यादा, और काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप पे. जैसे क्लाइंट इनकॉन्ग्रुएंस, जैसे जो क्लाइंट का इनकॉन्ग्रुएंस होता है वो वही क्लाइंट को मोटिवेट करता है टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. देन क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप, तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए
that the client will be devoted to growth, while counselor will offer unconditional acceptance to facilitate client's journey. Or last, the client का perception, client perceives should be able to perceive the counselor's unconditional regard and empathy. So this is not that important. Now moving on to the evaluation. तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का जो फोकस है, shifted the scope and culture of therapy drastically. पीसीटी जब आया तो इससे थेरेपी को बहुत इससे बेसिकली थेरेपी को काउंसलिंग को बहुत एक अलग डायरेक्शन दी. It was the first therapy that provided transparent records of completed cases. इससे क्या हुआ कि this helped draw many allied disciplines into the fold of psychotherapy as professional counseling spread across schools, organizations, and their management and parents. PCT is well suited for early phases of intervention, mild and moderate mental health problems. It can be employed in the group and individual settings and across disorders like anxiety, depression, personality disorders, etc. PCT has had major contributions to the field of psychotherapy. It reconceptualized the client as an active part of the change making process. It took into account clients' inner experiences and their interpretation of them. It also focuses on long-term counselor training as opposed to a short-term technique-centered training. It is a flexible approach which takes clients' perspective states into account, and because of client-centeredness, it can be adapted to various cultures. और इस थेरेपी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे जो फोकस होता है ऑन थेरेपिस्ट बीइंग एज अपोज टू फिक्स टेक्निक्स. मतलब बेसिकली लैक अ स्ट्रक्चर, इट लैक्स अ स्ट्रक्चर. पीसीटी वुड वर्क बेस्ट विद insightful and hardworking clients. So PCT also discounts past experiences as significant influences in the person's present, while overemphasizing on past experiences is too deterministic, but completely discounting them is counterproductive too. So these are some of the limitations. तो ये तो हम कर चुके हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ये सारे कंसेप्ट. इसमें मैस्लो की जो हायरार्की थी, बिकॉज whenever we talk about self actualization we do talk about मैस्लो का हायरार्की और मैस्लो का जो भी कंट्रीब्यूशन था in PCT, or to be honest in humanism. So that is also considered usually. So just a minute. Yes, goals हमने पढ़ लिए थे. टेक्निक्स ऐसे कुछ मेन होते नहीं है. मेनली empathetic understanding, then unconditional positive regard and congruence. Strength और limitations एक बार देख लेते हैं. So this approach revolutionized the counseling with psychotherapy and demystifying it by making audio tapes of actual sessions. Okay, so this is the first strength. Then this approach to counseling is applicable to wide range of human problems. मतलब बहुत सारे जैसे leadership development, decision making, etc. Then person-centered approach seems to have the potential to create the necessary conditions that counteract stigmatization, allowing adolescents who are associated with a stigmatized sexual minority group to cope with their sexual identity in a manner that is more constructive for them. Because here we provide unconditional positive regard and empathetic understanding. ये जो approach है, it generated extensive research. Then it is effective in a number of settings. Uh, then it has a positive view of human nature and it continues to evolve. Then also it is less time consuming and it is short term nature of the helping process. अगर हम limitations की बात करें तो ये ज्यादा ही simple, optimistic और unfocused है clients के लिए, जिन जो कि crisis में है, या फिर जिनको बेसिकली ज्यादा स्ट्रक्चर और डायरेक्शन चाहिए. ये बहुत ही ब्राइट, इंसाइटफुल और हार्ड वर्किंग क्लाइंट्स के लिए बेस्ट होता है. और इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है, और इसको चिल्ड्रन चिल्ड्रन पे तो यूज नहीं किया जा सकता, और जो सीवियरली डिसेबल्ड है उनके भी नहीं.
कुछ लोगों को ये ओवरली ऑप्टिमिस्टिक लगता है, कुछ एक्सपर्ट्स को, आई मीन। देन इट इज void of specific techniques to bring client changes। जैसे कि हमने पढ़ा, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है। तो हाँ, these are some limitations। So yeah, this much is done। इसमें हमें ये सब we have covered। So yes, this was about humanistic humanistic counseling, or we can say person-centered therapy, क्योंकि इसमें हमने मेजरली वही पढ़ा है। Now let's move on to existential therapy। So existential therapy focuses on free will, self-determination, and the search for meaning, often centering on the individual rather than on their symptoms। तो ये बेसिकली फ्री विल और सेल्फ डिटर्मिनेशन पे फोकस करता है। इट emphasize a person's capacity to make rational choices and to develop to their maximum potential। This type of therapy is often useful for patients who experience existential threat or dread when security and identity feel in peril। तो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या स्ट्रेस करता है कि सारे लोगों में कैपेसिटी होती है सेल्फ अवेयरनेस की, हर एक इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी होती है जो कि जानी जा सकती है ओनली थ्रू रिलेशनशिप विद अदर्स। और जो लोग हैं वो स्पॉन्टेनियसली खुद को रिक्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ का मीनिंग कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। देन व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी? It focuses on anxiety that occurs when you confront the conflict that is an inherent part of life। तो एक थेरेपिस्ट हेल्प करता है आपकी टू फोकस ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजंस, कि बेसिकली आपकी लाइफ आपके हाथ में है, इट्स योर डिसीजंस, लाइक हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। देन व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी? तो जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का, वो ये है कि ह्यूमन means to experience a certain level of anxiety, and that accepting this fact is an important step toward living up to your potential। Existential therapists believe that this intrinsic anxiety stems from a few basic givens about what it means to be a human, four facts we all have to confront in life। These fundamental principles include uh, वी हैव फ्रीडम, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, बट ये जो फ्रीडम है इट कम्स along with responsibility because we have to make our own decision। And we all struggle with the idea of mortality, that death is inevitable। Feeling or experiencing isolation from others is part of human experience। We are all constantly looking for meaning in life, and that we often experience a sense of meaninglessness। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड वी समटाइम्स लाइक उसी एंजाइटी को हम काफी नेगेटिव लाइफ में ले लेते हैं, बट वो हमें नहीं करना चाहिए। तो उसी मेन गोल वही होता है इसमें। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी टेक्निक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो देयर शुड बी ओपन डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट विदाउट जजमेंट। तो अगेन इसमें भी कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक्स नहीं होती है। अगेन इट्स मोर लाइक कि थेरेपिस्ट कैसा है एंड थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप कैसी है। तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है उसमें काफी ओपन डायलॉग्स होने चाहिए। थेरेपिस्ट फ्लेक्सिबल, एक्सेप्टिंग और सपोर्टिव होना चाहिए। माइंडफुलनेस विच इज मोर लाइक कि प्रेजेंट में फोकस होना चाहिए while building a meaningful future। Encouraging patients to remain present by asking questions about their experiences। इससे क्या होता है? It encourages experiencing life fully and authentically। Then treating all experiences as equally important in their potential for meaning। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस कम या ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। Treating negative feelings and inner conflict, these are considered good reactions that should be explored instead of quickly cured। हम यूजुअली एंजाइटी से भागते हैं, नेगेटिव फीलिंग से भागते हैं, बट उनको भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए।
or encouraging exploration of new ideas and experiences. Trying new things can help a patient build their future on their own terms. And discussing interactions with the larger world. This helps patients find their place in society or culture. Moving on to the goals, one of the main goals of existential therapy is to help clients break out of limited thinking and expand their self awareness, along with helping them find alternate options and solutions to their problems. ये जो लिमिटेड अवेयरनेस होती है जो कि क्लाइंट फेस करते हैं, इट ब्लॉक्स देयर एबिलिटी टू सी द नेचर ऑफ देयर प्रॉब्लम, और इसको हम रिस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो जो गोल होता है वो ये हो जाता है कि हम क्लाइंट्स को उनसे बोलें कि दे कैन चेंज देयर माइंडसेट, एंड उनको एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ पे दे कैन सेफली सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड असेस देयर पार्ट इन देयर स्ट्रगल्स। इससे क्या होता है, जो फीलिंग्स होती है एंजाइटी, हेल्पलेसनेस और सफोकेशन की, वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग की वजह से होती है। इसके लिए थेरेपिस्ट क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है एंड इवन प्ले अ फॉर्म ऑफ डेविल्स एडवोकेट टू फाइंड न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। But with new options to consider, a person can break free of self-imposed chains and come to find more peace within their bodies and minds. Not only is existential therapy helpful in one-on-one setting, but it can also help within the realm of group therapy, family and couples therapy, community building, because it allows all people to see another perspective, expanding the mind and the heart in the process. From addiction issues to depression struggles, existential therapy can cover a wide range of ailments. But कुछ limitations भी होती है. Uh, It may be misunderstood by people who do not have a thorough grasp of the fundamental principles or scope of the associated theories. It can help to develop awareness of the principles, theories, and given before and while participating in treatment. So, this is not that important. Limitations हम यहाँ से पढ़ते हैं. So, existential therapy may not be the best fit for everyone. Then the process may be overly intellectual. Also, it may conflict with some religious beliefs. Then some people may also find it too challenging because because it welcomes painful experiences as a catalyst to your growth. It takes an anti-spiritual approach. For example, denying the existence of God. It requires of trained therapists that especially can deal with resistant patients. It can be ineffective to individuals who present difficulties to communicate in a proper way and also who are not willing to change their attitudes and perspectives. It is very wide and doesn't propose many theoretical foundations about specific behaviors and difficulties existing to this respect. So I hope these are clear because language काफी simple थी इसलिए I didn't elaborate on it. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Moving on, जो अभी existential हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So existential therapy owes its genesis to the European philosophers Martin Heidegger, Soren Kierkegaard, and Jean-Paul Sartre. Have you ever experienced any dreadful situation in which you feel that it's the end of the world? Uh, in this journey called life, one is sometimes thrown into such circumstances. The challenges faced if taken positively provide a myriad of opportunities and can turn the tide in favor of the one who is struggling. तो जो तीन मेन पायनियर है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में, विक्टर फ्रैंक रोलो में और इरविन येलो, ये they experienced extreme situation in their life which rendered them opportunity to test some perpetual questions that pervades human life, questions pertaining to meaning in life, existence of God, death, and self, etc. All of them in common were interested in issues of freedom, meaning of life, anxiety, search for values, responsibility, isolation, and death. So, existential therapy is not
a very well defined और structured approach. इसको यूजुअली एक सेपरेट स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है, ना कि इसको एक कंप्लीट मॉडल समझा जाता है थेरेपी का. Then moving on, what is the view of human nature in existentialism? With the motivation to help people suffering from existential crisis, like meaninglessness and alienation, the existential tradition seeks to strike a balance between recognizing the limits of human existence at one end of the spectrum to the limitless possibilities and potentials of human life on the other. It also juxtaposes the brighter side of life, courage, hope, meaning, with the darker side, anxiety, dread, threat. ये जो अप्रोच है ये रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन नेचर में जो इंक्विजिटिवनेस होती है, जिससे हम खुद के बारे में और दुनिया के बारे में वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस. हम इट assumes that humans are motivated to make sense of their existence. Basically that's why it focuses more on the uh, life का meaning क्या है and all that. That's why it is called existentialism. It also recognizes the unfolding nature of self processes and looks at individuals as a set of possibilities that manifest as per the choices they make. कुछ बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल अप्रोच. पहला है सेल्फ अवेयरनेस. अवेयरनेस से क्या होता है, हमें फ्रीडम मिलती है. फ्रीडम से मतलब हम वी ऑलवेज हैव चॉइस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो एंड इसका मतलब ये है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन चॉइसेस. So acknowledging the freedom to be, as well as recognizing the contextual and social constraints and negotiating the two constitutes life. And choosing to expand one's awareness implies growth. Talking about choice and responsibility, तो humans जो होते हैं वो masters होते हैं खुद के and have the necessary freedom to choose among different life paths and they make their own life. Humans have the basic need to maintain their uniqueness and individuality as well as are motivated by relational and social needs. There is ongoing research for meaning, purpose, values, and goals in our lives. When we experience meaninglessness or emptiness in our lives, we are motivated to create a life with purpose. Then humans experience anxiety in their efforts to become their authentic self. इस anxiety को हम existential anxiety बोलते हैं, and this is inevitable. It results when we come face to face with death or loss, pain and suffering, meaninglessness and existential vacuum, isolation and uncertainty in life. Death is inevitable, and rather than avoiding it, awareness of its inevitability makes life significant and helps us appreciate the present. Then moving on, what is the main therapeutic goal of existential therapy? It helps the client become self-aware and embrace their authentic self. This includes inviting clients to come to terms with their problems, supporting them to come up with the alternatives to reclaim and re-own their lives with authenticity. The specific goals include helping clients be fully present to themselves and in relationships, motivating them to take charge of their lives with responsibility and to broaden their perspectives of looking at themselves and the world. The task is to assist clients in exploring their lives further by learning lessons from the past and creating something valuable in the present. Then, what is the role of the counselor? The counselor ensures that the client realizes the importance of personal responsibility and accepts responsibility for their life and their choices. Blaming others is not the solution. Even when client does blame others for life condition, counselor motivates them to look into their contribution to the problem situation. The counselor invites clients to become self-aware, for only when a person is self-aware, he or she can expect and live life responsibly. It's like therapist holding up a mirror for the client to reflect and confront themselves. This helps them realize how they are living an inauthentic life and restricting their existence and makes them ready to change for their future. तो ये जो थेराप्यूटिक जर्नी है इसको यूनिक और क्रिएटिव प्रोसेस की तरह समझा जाता है.
and it is like unique for every client. Counselor अपने खुद के authentic way में of relating to the client creates a space for exploration and experimentation and encourages clients to do the same in real life situations too outside of therapy. क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस होता है थेरेपी में? तो they play an active role in the process of reflection and exploration of self in the world. Clients experience diverse shades of emotion from fear to anger, joy, sadness to excitement. They become increasingly aware of how they are shackling themselves and hence might also taste some bit of existential freedom. Agency and responsibility is emphasized. Translating their realization into action is a mark of effective therapy. Taking a small steps towards a more fulfilling, happy, and meaningful life with courage and hope, recognizing the freedom that they have and extending the freedom through these small steps is emphasized by existential thinker Rollo. Now let's talk about techniques or strategies. Viktor Frankl, a leading existentialist, came up with logotherapy, which emphasizes on finding meaning in life. He who has a why to live can bear with almost anyhow. It highlights the client's experiences and subjective world to find out meaning in one's existence here in the world. The focus is not on diagnosis or planning interventions, rather on describing, understanding, and exploring the client's subjective reality like a fellow traveler or philosophical companion. Now, moving on to client counselor relationship, therapist honesty, integrity, courage, and authentic ways of being influences the client also to be progressively authentic. Moving on to the evaluation part. Existential practice has been applied in a variety of settings and with a diverse population of clients, including those with substance abuse issues, ethnic and racial minorities, gay, lesbian clients, psychiatric inpatients. It is effective for clients with developmental crisis, experiencing grief, confronting death, or facing a turning point in life. It lacks some systematic principles and techniques of psychotherapy. Another major drawback is amount of maturity, experience, and training required from the practitioners. The existential therapist need to be wise and must be capable of profound human understanding of life and its nature. So this was about existential therapy. Uh, let's see the strengths and limitations once more. So strengths, it emphasizes uniqueness of each individual and the importance of meaningfulness in their lives. It recognizes that anxiety is not necessarily a negative condition. Anxiety is a part of human life and can motivate some individuals to make healthy and productive decisions. This approach gives counselors a tremendous amount of philosophy and literature that is both informative and enlightening about human nature. The approach stresses continued human growth and development and offers hope to clients through directed readings and therapeutic encounters with counselors. It is effective in multicultural counseling situations. It helps connect individuals to universal problems faced by humankind, such as search for peace and absence of caring. This approach can be combined with other perspectives and methods to treat extremely difficult problems such as addiction. Then, talking about existential therapy, the limitations, not produced a fully developed model of counseling. Professionals who stress developmental stages of counseling are particularly vehement in this criticism. This approach lacks educational and training programs. It is difficult to implement beyond an individual level because of its subjective nature, lacks the type of methodology and validation processes prevalent in most other approaches. It also lacks the uniformity that beginning counselors can readily understand. This approach is closer to existential philosophy than to other theories of counseling. This distinction limits its usefulness in some areas. So these are strengths and limitations. So I hope this much is clear. So this was about humanism and existentialism. If you have any doubt, please do ask in the comment section. Also, I didn't choose to make
PPT because most of you do ask for notes. And if you are preparing for college का exam, then you have to explain things in detail. मैंने इसमें बहुत सी lines skip कर दी बीच बीच में because I focused on telling the major parts, major theory, major part which is involved in counseling process in humanism and existentialism. If you want to read more, you can read it from here itself. You won't have to download any PDF or just go to Google to find these resources. So you can just take a screenshot, or even while watching the video, you can just make your own notes. Please do let me know if this is useful for you. Me teaching from like these PDFs rather than making a PPT because I don't have any problem in making PPT. I just thought it might be more useful. So you can just let me know which method works better for you. So I will do accordingly. मैं आगे के वीडियोस उसी बेसिस पे बनाऊंगी. Your feedback does matter a lot to me. So please do let me know in the comment section. And thank you so much for watching the video.